Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today's topic of the video is how to write a case study. So many a times जब हम research proposal लिखते हैं या फिर usually competitions होते हैं, we go through the word case study. So what exactly case study means and what is the format of the case study, what are the components that you must include in a case study paper, and what are the main objectives of case study that we are going to cover in today's video. So first of all, the key questions that are like these are of vital importance in case study. What exactly is the study about? What exactly आप किस topic पर study कर रहे हैं? और how is this case identified? और आपने क्यों select किया? और ये कैसी काइंड ऑफ स्टडी है? जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, रिसर्च स्टडी है या कंपटीशन के लिए कोई केस स्टडी लिख रहे हैं आप, और एनी मिसलेनियस पर्पस. क्या इस केस स्टडी के लिए कोई रिलायबल एविडेंस है, क्या कोई प्रूफ है, और एनी मॉडल डिजाइन और एनीथिंग. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटिंग दिस केस स्टडी? ऑब्जेक्टिव क्या है केस स्टडी का? मेन आपका मकसद क्या है? व्हाट इज फेयर एंड एक्यूरेट अकाउंट? और ये सारी जो है बिजनेस स्ट्रैटेजीज हो गई, या फिर आप कह सकते हैं फंडिंग, ये सारी चीजें जो अगर कोई बिजनेस प्रपोजल है तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारी चीजें कवर करनी है. सैम्पलिंग हो गई या फिर मेथड एनालिसिस, मेथडोलॉजी इन शॉर्ट आपकी पूरी. सो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले तो केस स्टडी होती क्या है? Case study is the study of particularity and complexity of a single case. अगर आप केस स्टडी कर रहे हैं तो आप तीन चार एक साथ नहीं लिखेंगे, आप एक पर्टिकुलर केस पर ही फोकस करेंगे. Relevant case will include public and non-profit organizations, यानी NGOs भी कह सकते हैं, या फिर और ये जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट होता है. ये आप अगर किसी NGOs के अगर कोई केस स्टडी कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई प्रॉफिट के लिए केस स्टडी कर रहे हैं, सो इट्स नॉट बेनिफिशियल ज्यादा. आपको यूजुअली केस स्टडी पब्लिकली रखनी होती है. And cases are bounded integrated systems, hence we observe working parts that connect people with the program in some sort of purposive fashion. Some cases are so important in themselves that we focus on studying their intrinsic qualities. So basically they are considered instrumental to understand the larger issues. अगर आप केस स्टडी करते हैं तो आपको जो आगे फर्दर होने वाले इश्यूज हैं उसके बारे में जानकारी मिल सकती है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो फॉर्मेट फॉर ऑल द केस स्टडीज एक्सेप्ट रिसर्च वर्क. रिसर्च वर्क का एक अलग फॉर्मेट होता है, दैट ऑल्सो विल कवर इन दिस वीडियो. बट इफ यू गो टू सी देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर राइटिंग एनी केस स्टडी. सबसे पहले यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन. एक कैजुअल एग्जीक्यूटिव समरी टाइप होता है इंट्रोडक्शन के, एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि what exactly is your case study about. Next is the design, discussion and the analysis of the same. So आपने अगर कोई केस स्टडी किया है तो उस अगर वो कोई रिलेटेड टू एनी मिसलेनियस वर्क है, जैसे कोई पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फील्ड से कोई इक्विपमेंट पर स्टडी है, तो आप उसकी डिजाइन मेंशन करिए, उसके बारे में बताइए. एंड एनालिसिस करिए थोड़ा सा, जैसे कि व्हाट इज द सैंपल दैट कैन बी detected by that instrument, what all are the advantages, disadvantages, and overall उसके बारे में. In short, you have to write about the short theoretical framework of that equipment or that particular design. Next that you need to mention is the cost benefit analysis. अगर आप एक ये इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है तो अब इसका फायदा कितना है. अगर ये 300 रुपए की डिवाइस है तो क्या इससे एक अच्छा वर्क हो रहा है, क्या इससे अच्छा काम हो रहा है, दैट यू नीड टू राइट. एंड व्हाट आर द फंडिंग्स. अगर आप ये 300 रुपए की इक्विपमेंट ले रहे हैं तो कितनी लेंगे, उसको कितने में बेचेंगे, एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट. इट्स लाइक ऑल अबाउट द केस स्टडी. क्या आपको डिटेल बताना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द कॉस्ट, प्रॉफिट, एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज employed, the problems that are faced. अगर कोई problems face हुई होगी while selling or whatever, while distributing, while making, so that you need to mention. Next जो है वो conclusion and results है. So conclusion and results mainly आपका end part होता है, and इस पर बहुत focus करते हैं लोग. Introduction and conclusion are two vital parts of your case study paper, and at the end you need to mention the references as per the Harvard's citation. It would be better अगर आप Harvard के rule follow करें for citation of references. It would be a little more professional if you go do so. Next अगर हम देखें,
अगर हमने केस स्टडी चूज करी है तो क्या ये केस स्टडी जस्ट पर्पस क्या है उसका, क्या कोई मिसलेनियस पर्पस है या रिसर्च प्रपोजल के लिए है? जो केस स्टडी होती है, इट इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ वन पर्सन, ग्रुप और इवेंट। अब ये जो केस स्टडी है ये एक ही होनी चाहिए, लेकिन ये एक होगी, ये एक इंसान से रिलेटेड हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, एक ग्रुप से रिलेटेड हो सकती है। एंड दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस ऑफ विच केस स्टडी लिखी जाती है, या तो क्लास डिस्कशंस के लिए, या तो कोई एग्जामिनेशंस होती हैं, काफी बार सब्जेक्ट्स में भी केस स्टडी इंक्लूडेड होता है, रिसर्च प्रपोजल, illustrations of theory or any other homework or project designing etc. Next अगर हम देखें तो these are some of the common things that we need to include in our case study. Majorly ये सारे हमें follow करने होते हैं when we are writing case study, and this is a format for research paper as well. So if you are going for a research work, you can write all of these components. सबसे पहला पेज जो है वो कवर पेज होगा, जिसपे स्टूडेंट्स नेम एंड स्टूडेंट्स आईडी और कोई भी ऐसी आइडेंटिटिकल चीज जो रिप्रेजेंट करे कि ये आपका है। यू हैव टू राइट एन एग्जीक्यूटिव समरी। नोट, एग्जीक्यूटिव समरी और इंट्रोडक्शन दो अलग अलग हेडिंग्स हैं। एग्जीक्यूटिव समरी में it if appropriate should be written at last to focus on the key points. So आपको हमेशा याद रखना है कि इंट्रोडक्शन हमेशा हम बिगिनिंग में लिखते हैं, बट एग्जीक्यूटिव समरी बेटर होगा अगर हम एंड में लिखते हैं। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इट शुड बी रिटन एट द लास्ट। सो वो ज्यादा फोकस करेगा क्या एग्जैक्टली क्या क्या उसका मेन फीचर्स एंड मेन पेक्युलरिटीज ऑफ द केस स्टडी। Introduction, if you go to see current situation analysis and pertinent background that include a short synopsis of the information. Synopsis मतलब छोटी सी introduction के हाँ ये case study agriculture से related है, या फिर if a person is reviewing your case study he would come to know that what exactly he is going to read ahead. नेक्स्ट जो हमारी बॉडी पार्ट आती है, बॉडी पार्ट में हमें टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन करना है। तो अगर सपोज आप कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे जो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, तो वो मार्केट में कैसे आप लाएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यू एम्प्लॉय सो दैट वो ज्यादा सेल हो, और व्हाट आर द नीड्स ऑफ द मार्केट, एनालिसिस इन डेप्थ एंड द की इश्यूज। recommendations वाइटल पार्ट होता है, लेकिन इसे यूजुअली आप कंक्लूजन के साथ लिखते हैं, सो इट मेक्स मोर डिफरेंस। Recommendations should include decision criteria, assumptions, data analysis, etc. So आपको mainly इसमें जो assumptions हैं कि this instrument could be sold in this much, this instrument can make, it can detect this much of data or this much of sampling, so that you need to mention here. Next is justification and predicted outcome. This is not compulsory, it depends on you. If you want to mention, you can write this topic, or else you can skip this as well, it's not that important. Conclusion and references, as we spoke before, आपको definitely इन्हें include करना है. So अगर आप divide करेंगे तो there are three parts. एक जो है एक cover page that would include a little bit of introduction. Next जो है वो body part है, that is the main part of your case study, और आखिरी जो है वो ending part है जिसमें conclusion and references आते हैं. So speaking about the do's and don'ts of the case study, please try to use your own words and ideas based on the research rather than copy pasting it from others' words from the internet. So जो idea होता है case study का, अगर आप research proposal के लिख रहे हैं, so try to do your own case study. Do not just simply copy paste data from Google. Next, you must use proper Harvard style inline citations. ये mainly citations जो होते हैं जब आप figures, tables and references जब आप include करते हैं. So you need to mention Harvard style in citations. That's quite professional. इसके जो मैंने I'll in my previous videos as well I have mentioned about Harvard style in citations. I'll send the description in the description box. I'll send the link so that you all can easily get access to this. Harvard style in citations एक फॉर्मेट होता है, जैसे अगर आप पहले शुरू कर रहे हैं तो वॉल्यूम, एडिशन, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द जो ऑथर होता है अगर आपने कोई बुक से लिया है, या अगर कोई साइट है तो उसमें साइट का फॉर्मेट होता है. So you need to mention Harvard style in citations. All the charts, images, financials, visuals, related items can be placed here and referred in report.
ऑलवेज कीप द केस स्टडी स्मॉल एंड इंफॉर्मेटिव. आपको केस स्टडी में ज्यादा चीजें इंक्लूड नहीं करती रहती है, जस्ट मेक इट अप टू अ लिटिल अमाउंट कि वो प्रॉपरली हो जाए. If typing in Word, we look out for left and right intent. Whenever you're typing in the words, this is the image, left indent और right indent जो होता है. अगर आप ऐसे एकदम haphazard manner में लिखते हैं, so it looks very unprofessional. देखिए ये जो blue में highlighted है, it's quite organized. ऐसे लग रहा है it's between two properly framed. So आपको left and right indent देखना है और उसके बीच में ही अपना data रखना है. And always try to justify. जस्टिफाई मीन्स वर्ड में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं जैसे लेफ्ट राइट मिडिल जस्टिफाई. सो see to it that you justify your case study whenever you're typing in Word. And check out for a plagiarism checker. Plagiarism checker mainly अगर आप case study research के लिए रख रहे हैं, so see to it that you put your data, you put your case study into this checker. It's absolutely free of cost. And देखिए आपने यहाँ पे लिखा आ रहा है, so मैंने अपना डेटा इसमें डाला था, तो it's 100% plagiarism and 0% unique. सो अगर मैंने कोई चीज पूरी की पूरी कॉपी की हो तो वो 100% प्लेगरिज्म दिखाएगी, और अगर यूनिक हो तो वो 100% यूनिक दिखाएगी. लेकिन अगर आप चाहे सो आप अपने आप ही इस चेकर में इट मेक इट यूनिक का ऑप्शन होता है. सो इट विल इटसेल्फ रीफ्रेम द सेंटेंसेस फॉर यू सो दैट इट डजंट गो फॉर अ कॉपी केस. नेक्स्ट हम इन डिटेल स्टडी करेंगे हर एक कंपोनेंट के ऑफ द केस स्टडी फॉर द रिसर्च वर्क. एग्जीक्यूटिव समरी. एग्जीक्यूटिव समरी जो है अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 वर्ड्स में आपको लिखनी होती है, नॉट मच. जस्ट शोकेस द 2-3 बुलेट पॉइंट्स दैट प्रूव द जो है आपको हेल्प करेगा. एंड राइट 2-4 सेंटेंसेस समराइजिंग द एंटायर केस स्टडी. सो ये आपका पूरा जो पेपर है वो 2-3 लाइंस में आपको सम अप करना है कि हाँ दिस केस स्टडी इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. And the purpose of the executive summary is to consolidate the principal points of your paper in one place. यानी कि ये जो आपने 4-5 पेज का सपोज केस स्टडी लिखी है, तो ये 4-5 पेज को 4-5 लाइन में ट्रांसफॉर्म करता है, so that the reader can get a rough idea about the paper. And the executive summary is a comprehensive restatement of the document's purpose, यानी कि objective, scope, methods, conclusions, results, recommendations, and findings. The executive summary should be proportional to the length of your paper. Yes. So अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा like 5 to 10, 6 pages or something like that, so it's 500 words तक लिखना चाहिए. और अगर आपका case study is like of 1 or 2 pages, so 50 words is enough. So this you can say that you just have to highlight the important bullet points into this particular component. Next is the introduction. The introduction will provide the reader with the background information for the research reported in the paper. Its purpose is to establish a framework for the research case study so that the reader can understand and how it is related to the other paper. So case study जो है basically एक literature review के point of view से हम देखें तो important होती है कि it gives a multiple purposes for our reader to read the introduction. So you can just mention a proper in short introduction for your paper. Literature review. The literature review जब आप case study लिखते हैं तो essential हो जाता है लिखना, because it serves as a benchmark for comparing the results. यानी कि अगर आपने अलग अलग 2-3 case study करी है तो आप इसको एक लिटरेचर रिव्यू के टॉपिक के अंदर उसको शैडो कर सकते हैं. You can just encompass it in the literature review so that the reader can come to know that you have gone through 2-3 case studies and this is a particular case study that you have prepared. So उसके अगर कोई results हो या फिर कोई contradictions हो, जैसे अगर एक पेपर में लिखा आ रहा है कि ये 10 ग्राम से ऊपर को वेट नहीं कर सकता है, बट एक पेपर में लिख रहा है कि इट कैन वेट 10 ग्राम्स एंड और अ हायर वेट. सो ये दोनों ऑपोजिट चीजें हो गई. सो आप ये दोनों केस स्टडी में एक ही पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं. Also, it shares with the reader the results of the other studies that are closely related to report. It studies the larger to larger ongoing dialogue in the literature about the topic. So it's better that you mention about the literature review in your case study for a research proposal. Next is methodology. ये जो है एक short research paper के लिए methodology जो है, जो case study that you need to mention. How will you do the method? How did you do this case study?
what to do, what did you do, आपने क्या किया, आपने कैसे किया, how will you solve the problem, अगर ये केस स्टडी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके सोल्यूशन क्या होगा, हाउ टू एग्जीक्यूट, अगर आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया तो अब आप ये सोल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, विच एरिया टू टारगेट, अब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो अब आप इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे, अगर इंडिया में प्रॉब्लम है सो ऑब्वियसली यू वुड टारगेट इन इंडिया, if the world if the problem is pandemic that is all over the world COVID-19 तो आप all over the world आपका टारगेट होगा, so that is the main purpose of methodology. The section specifies the type of design utilized in the paper, like the approach to the data collection, data analysis, and report writing. It should encompass the detailed context of the research, like jurisdiction, organization, key information, discussions, interviews, reviews, case files, etc. नेक्स्ट जो है हमारा एनालिसिस ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी एनालिसिस जो है आपको 3 स्टेप में प्रिपेयर कर सकते हैं, वन इज प्रिपेयर द केस, ड्राफ्ट द केस, फाइनलाइज द केस। सो आपको मेनली इसमें एनालिसिस करनी होती है, डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल सोल्यूशंस, ऐसे नहीं कि मैंने एक सोल्यूशन फाइंड किया तो दैट्स सफिस, अगर उसके 4-5 मल्टीपल सोल्यूशंस हैं तो आपको वो मल्टीपल सोल्यूशंस ढूंढने हैं और आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब उसके इवैल्यूएशन करना है पूरा पेपर का इन शॉर्ट। एंड द कॉन्शियस कंजंक्शन विद अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड रीजनिंग, ये एक रीजनिंग देता है आपके, यू नो जैसे ये एज अ प्रूफ सर्व करता है फॉर योर पेपर। The analysis compares the findings of the study with the benchmarks that are established in the review of literature. नेक्स्ट अगर हम देखें केस स्टडी में इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। सो केस स्टडी का कंक्लूजन जो है ये परफेक्ट एग्जांपल है कंक्लूजन का। सबसे पहले आपको चैलेंज फेस्ड लिखना है या तो प्रॉब्लम्स फेस्ड, कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी इसीलिए मुझे ये केस स्टडी करनी पड़ी। उसके बाद आपको सोल्यूशन, और ये सारा 1-2 लाइंस में ही करना है आपको। सोल्यूशन, हाँ अब मैंने प्रॉब्लम फाइंड कर लिया तो अब इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद यूजेबिलिटी कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट, यानी कि अब मैंने सोल्यूशन ढूंढा है तो ये सोल्यूशन कितना यूजफुल है, कितने लोगों को मदद कर सकता है, हाउ फार कैन इट गो। उसके बाद बिजनेस इम्पैक्ट, अब अगर मैंने इसे ढूंढा है तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना करना है, दैट यू नीड टू फाइंड। और ये पूरा रिफ्लेक्शन होता है आपके केस स्टडी के रिपोर्ट का। दीज आर द शॉर्ट वर्जन ऑफ हाउ टू राइट अ कंक्लूजन फॉर केस स्टडी। This section does not need to be long. The writer has an opportunity to loose up the ends and summarize it with the proper recommendations for concluding the paper. हमेशा याद रखिए, आप रिसर्च, रिव्यू, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, एनी रिपोर्ट, रिसर्च कुछ भी लिखते हैं, your abstract and introduction along with your conclusion is very very important because उस पे ज्यादा फोकस करते हैं. So see to it that it's very appropriate and apt. नेक्स्ट आखिरी हम देखेंगे रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस। रेफरेंसेस आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मार्क करना होता है, हार्वर्ड साइटेशन से रेफरेंसेस मार्क करने होते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में बताया है। आई वुड डेफिनेटली जस्ट पिंच द लिंक इन द बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। recommend about the business journals, periodicals, textual references and any online research. Appendices जो है ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट दिया है यहाँ पे अपेंडिसेस का। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज, डेटा ऑब्जर्वेशन शीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जस्ट यू कैन पॉज एंड हैव अ लुक एट इट। नथिंग कॉम्प्लेक्स, बट अपेंडिसेस इफ यू इंक्लूड, आपको उसका अगर 2-3 इंक्लूड करने तो आपको A B C D ऐसे उसे पर्टिकुलर साइटेशन देने होंगे और इसे बोल्ड नहीं करना है, इसे नॉर्मल रखना है। Either you can use Times New Roman for writing your case study. Times New Roman is the best text that you can use because it's very very professional text. So and a font size of 12. So font size of 12 and Times New Roman is the best format for writing a case study. So that's all for today's video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो so please do like, share and subscribe and let me know in the comment section what all videos you want me to upload next. एंड अगर आपको कोई डाउट्स है सो फील फ्री टू लेट मी नो। थैंक यू सो मच एवरीवन।